Hello. Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. good afternoon, students. Are you able to hear Good me? afternoon, sir. Yes, sir. We are Okay. able. So, so yesterday we had solved which question? We were in exercise 4.4. Yes or no? Okay, so कल कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लास्ट? 4th वाला 4.4 का 4th क्वेश्चन, राइट? हाँ, 4th क्वेश्चन में दिस इक्वेशन यू नीड टू रिमेम्बर. इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दिस स्टेप you need to have some modification in working. Means what you are supposed to do, okay, initially just now when we expand, we will expand this determinant using the third column. So after this step, what we are supposed to do, we need to open these brackets. Okay, so yz into z minus y. So yz into z, so it will be yz square. Yz into minus y, so it will be minus y square z. So accordingly, I will get 2, 2 and 2, total 6 terms I will get. And out of these 6 terms, what I have done, x square वाला एक साथ रख दिया, y square वाला अलग से रख दिया, and z square वाला अलग से रख दिया. Okay, so this is nothing but the identity. Now, how to remember this identity, I will tell you. So after you get this step, x square into z minus y, y square into x minus z, plus z square into y minus x. So ultimately, this is the identity or the full form of this one, x minus y, y minus z and z minus x. So ये याद कैसे रखना है? Okay, so let me share with you so that you can easily understand. First of all, we have alphabets A, B, and C. So go like this: A minus B, then B minus C, and then like this, C minus A. So you will get left hand side of this, A minus B, look here, B minus C, C minus A. And expansion is A square into something plus B square into something plus C square into something. बट याद रखिए A square into something, तो यहाँ दो वेरिएबल आएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम A, सो A के अलावा क्या आ सकता है? B एंड C. सो लुक हियर, जो B माइनस C है उसकी जगह पर we should write reverse, which is C minus B. Okay,
चलो अभी यहां सोच के बताओ, आई हैव बी स्क्वायर, तो बी के अलावा ए और सी आ सकता है. हियर आई हैव ए एंड सी, बट व्हाट शुड आई राइट हियर? सी माइनस ए या ए माइनस सी? यस, ए माइनस सी. एंड हियर आई हैव सी स्क्वायर, तो ए और बी आ सकता है. आई हैव ए माइनस बी, लेकिन यहां पर क्या आएगा? ए माइनस बी या बी माइनस ए? B minus A. Okay. So look here, this is basically one identity. Okay, if you have A square into C minus B, B square into A minus C, and C square into B minus A. So in short, you can write like this: A minus B, B minus C, C minus A. हमारे क्वेश्चन में ए बी सी की जगह पर एक्स वाई जेड था. ओके, तो दिस इज इन द सेम फॉर्मेट, सो आई कैन राइट like this. Okay, if it is z minus y, so I will write y minus z. If it is x minus z, so I will write z minus x. If it is y minus x, so I will write x minus y. So I hope you are able to understand. Okay, this is basically in the format of expanded form, and we can simplify into reduced form like this. And this is your answer. So I hope you are clear. Raise your hand so that we can proceed to the next question. Okay. Still, if you have doubt, then you can let me know. Okay. Now, next question which we have. It is question number 5. If delta is this and Aij is the cofactors of Aij, then the value of delta is given by. Now, first of all, here capital Aij is the cofactors. Okay, so please note that here same element should be multiplied with cofactors of the same element. It means that when we expand, so look here in option number A, there is some problem. Here it is written look here. Here we have A11 element of first row first column, लेकिन उसके साथ कोफैक्टर है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, तो नहीं चलेगा. इन ऑप्शन नंबर सी ऑल्सो एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड उसका कोफैक्टर है ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, ये भी गलत है. नाउ in option number B and in option number D, ध्यान से देखो. In option number B, what is the issue which you are able to see? A12, A21. हाँ, A12 and फिर है A21. So do you feel that option D is correct? Yes, sir. Yes. So in option number D, look, elements are in proper order. Okay, A11 means first row first column का जो element है उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. So that is the correct option. Now, अब ये आपको मैं बताता हूँ कि what is the meaning of this. For example, A11. So A11 means this element, and ये कैपिटल A11 जो कोफैक्टर्स कर रहे हैं, कोफैक्टर्स मीन्स इसकी रो कॉलम छोड़ के जो 4 नंबर्स है, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. तो ये जो 4 डिटर्मिनेंट है, उन्होंने उनको नाम दिया है कोफैक्टर्स ऑफ
A11, उसको कैपिटल A11 नाम दिया है. सो वाइल फाइंडिंग और एक्सपांडिंग हम वही करते थे कि A11 एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे. यस और नो? Yes, we were doing like that. So then A11, A21, A31. Okay. So it is possible because it is not compulsory that row wise we can expand. We can also expand column wise. So A11, A21, A31. So this is column wise expansion. But cofactors का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, which is happening in option number D. So I hope you are able to get this meaning. Okay. Good. Now we have the concept of adjoint and inverse matrix. Already we know the basics. So let us go through one of the question so that we can understand it in a better way. So we have exercise 4.5 and we have find the adjoint of each matrices in exercise 1 and 2. And here we have, so what I will do, this first two I will not solve because I can give as a homework, because adjoint find करना पड़ेगा if you want to find inverse. So definitely I will go for question number 3 and 4. Question 3 हम solve करते हैं पहले. So here we have question number 3. Verify that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. So पहले ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6. मान लेते हैं दिस इज A. एक मैट्रिक्स है तो आई कैन राइट इन ब्रैकेट 2 3 -4 -6. So first of all, I will write minor. Now to find minor, I need to interchange these positions. So in minor, 2 की जगह पर -6 की जगह पर 2. And interchange these two positions. 3 की जगह पर -4 की जगह पर 3. So I have found minor matrix, then I will have to find cofactor matrix. And I told you one thing, to find cofactor at 2 position, I will have to change the sign, these 2 positions. So I will get cofactor matrix. The cofactor matrix will be -6 +4 -3 and 2 will remain as it is. So I found cofactor matrix. So minor cofactor. Then third step is to find adjoint matrix. How to find adjoint matrix? Interchange row and column of above. मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूं so that it remains a matrix. So adjoint matrix is transpose of cofactor. Okay, transpose का मतलब होता है अंश interchange row and column. Interchange row and column. So if I make this row -6 and 4, कॉलम बना देता हूं मैं -6 and 4.
सेकंड रो -3 and 2 कॉलम बना दूंगा. So I got adjoint matrix. And what the question says that कि हमने find कर लिया adjoint of A. Verify that A into adjoint of A. So A into adjoint of A. So I will make one line. First of all, I will have to write the matrix A again. 2, 3, -4, -6. 2, 3, -4, -6 into adjoint of A, जो already आपने ऊपर find कर लिया है. -6, -3, 4 and 2. And इन दोनों को multiply करना है. So when you multiply, so याद रखिए 2/2 के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो. So again you get the matrix of 2/2. एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो. अब देखो क्या करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लिखनी है 2, 3. Okay, so write like this: 2 into something plus 3 into something, 2 into something plus 3 into something. तो फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स से लेनी है. फिर यहाँ पर -4 and -6 सेकंड रो में ही लिखनी है, बट लाइक दिस के -4 into something -6 something, -4 something -6 something. ओके, साइन विल रिमेन सेम. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. एंड सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम वाइज लिखना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स was -6, 4. तो -6, 4 इसी कॉलम में लिखेंगे बट रो वाइज लिखेंगे. -6, 4 -6, 4. सेकंड कॉलम -3, 2 इसी में लिखूंगा मैं बट रो वाइज. -3, 2 -3, 2. And now find the value. So it is -12 plus 12. So this is 0. This is -6 plus 6, 0. It is +24 -24, 0. It is 12 -12, 0. So ultimately we got zero matrix where all elements are 0. So are you clear till this point? Yes, sir. Okay, and adjoint of A into AB करना है. Okay, so चलिए अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं. They are asking adjoint of A into A करो. So रिवर्स लिख देना है. adjoint of A -6 -3 4 and 2 into A करना है. A is 2 3 -4 -6. ये चेक करते हैं. दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 1. So if I multiply, then I will write like this: -6 into something, -3 into something, -6 something, -3 something. Then इसमें से second row 4 2 4 something plus 2 something, 4 something plus 2 something. From here 2 and -4. So row wise 2 -4 2 -4 लिखेंगे कॉलम में ही. And this is 3 -6. So 3 -6, 3 -6. Then it is -12 plus 12, 0. It is -18 plus 18, 0. It is 8 minus 8, 0. It is 12 minus 12, 0. So I got all zeros, zero matrix. This is my result number 2.
एंड क्वेश्चन में फाइनली इसको कंपेयर करने के लिए कहा था कि वेरीफाई वेदर इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. सो चेक करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड करना होगा. सो ए मैट्रिक्स 2 3 -4 -6 into I. I is one matrix where diagonal elements are 1. These are diagonal elements 1. Rest all elements are 0. तो check करते हैं and value of identity matrix is 1 basically. So in this place you can also write 1. And how to find value of this you already know. Multiply this, so it is -12. Multiply this, it is -12. बीच में minus sign. So basically it is -12 plus 12 into 1. 0 into 1. So again it is 0. So this is result number 3. So what we are able to confirm here is that A into adjoint of A is same as adjoint of A into that matrix is same as determinant of A into I. And this is the property जो हमेशा सच होती है. Okay, यहाँ पर वैल्यू 0 है but वैल्यू will be equal. So I hope you are able to understand this concept. Okay, so today we cannot take other question due to limitation of time. So tomorrow we will take 3 by 3 question. Okay, yes, and कौन सा स्क्रीनशॉट लेना Yes, है sir. ऊपर? Okay, we'll continue tomorrow. and स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ये वाला ओके. चलिए अनुज, मिलते हैं कल. बाय बाय.